Good morning everyone. Welcome back to Crack Grade B. मेरा नाम है ऋषभ. Let's begin today's class for economics and finance issues and analysis. Okay. Again some factual class. थोड़ा सा numbers होंगे ज़्यादा इसमें. But let's start it. Good morning Isha. Okay. Number 1. Exports from India contract most in nearly 3 years in March. तो मार्च महीने का है एंड ओवरऑल भी है. ट्रेड डेफिसिट का भी पता चलेगा ऑफ द सर्विसेज ऑफ द मर्चेंडाइज एज वेल एज सर्विसेज एंड ओवरऑल. लेट्स टॉक अबाउट इट. जस्ट वेट. ओके. तो outbound shipments from India. Outbound shipments means exports. Okay, exports from India saw their sharpest contraction in nearly 3 years in the month of March. Not overall, month of March, क्योंकि overall हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 6% से ग्रो किया, एटलीस्ट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, if not overall. Okay, so the outbound shipment from India saw the sharpest contraction in March, nearly by 14%. Nearly by 14%. कितना हो गया है? $38.38 billion exports in the month of March. What are the reasons? वही simple reason, geopolitical disruptions and a slowdown in developed economy due to inflation. ठीक है, तो geopolitical disruption है, supply chain issue and developed economy slowdown है, तो demand issue also. तो supply demand दोनों issue चल रहा है दुनिया में. So that's why our exports are being exports are falling. इवन इंडिया, अब सोचो कि इंडिया यूएई के साथ एफटीए किया. इंडिया मोर इन ट्रेड डेफिसिट बिफोर. व्हाट वाज इट बिफोर? इंडिया हैव स्टार्टेड टू ट्रेड विद रशिया. अराउंड $45 बिलियन का ट्रेड किया रशिया से हमने. एंड वी आर नॉट एक्सपोर्टिंग, वी आर ओनली इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया. वॉट एवर रशिया अमाउंट, रशिया imports from other countries like China or Vietnam. So yes, we are not being able to increase our exports even for the goods that we are good in making, for example medicines, etc. Okay, good morning Nivedita. Now reasons are, for the entire financial year however merchandise exports grew by 6% to $447 billion. अब ये मर्चेंडाइज का मतलब गुड्स एक्सपोर्ट, ट्रेड, जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात होती है तो हम लोग विजिबल्स की बात करते हैं ना, विजिबल्स. ठीक है, इनविजिबल्स आर करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट होगा तो इनविजिबल. विजिबल्स करंट अकाउंट डेफिसिट मीन विजिबल प्लस इनविजिबल बोथ. तो यहां देखते हैं कि $447 billion we have exported, 6% extra. How this growth? Why is this growth? Because there was a robust growth in India's merchandise export in the first 6 months. ठीक है, पहले 6 महीने जो फाइनेंशियल ईयर के थे, ठीक है, फ्रॉम अप्रैल टू लेट्स से सितंबर, our exports grew, then we have started to contract. Okay. अब ये $447 बिलियन तो ठीक है. ओवरऑल इंडिया का एक्सपोर्ट हुआ है $770 बिलियन. ओवरऑल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया इज $770 बिलियन. मर्चेंडाइज प्लस सर्विसेज. प्रोविजनल डेटा, बट यस इट इज $770 बिलियन. $760 बिलियन हम लोगों ने टारगेट किया था, $770 बिलियन भी है अचीव. ओके. नाउ इंपोर्ट्स. So India imported goods worth $58 billion in March. ठीक है, $38 billion एक्सपोर्ट किया, $58 billion हमने इंपोर्ट किया. ऑब्वियसली देयर विल बी अ ट्रेड डेफिसिट अराउंड $20 बिलियन. ठीक है, अराउंड $20 बिलियन की ट्रेड डेफिसिट इन मार्च. ओके. नाउ ऑन अ क्यूमुलेटिव बेसिस ग्रोथ इन इंपोर्ट वाज 16.5%, that is $714 billion during financial year 23. Again this $714 billion is for goods only. Okay, $714 billion for goods only. ओवरऑल हमारा इंपोर्ट कितना रहा? अराउंड $892 billion. ओवरऑल इंपोर्ट्स आर $892 billion. Okay. Now trade deficit. So our trade deficit in March is 19.73. मतलब माइनस ही करना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट.
around $20 billion or $19.73 billion. Okay. A merchandise trade deficit total $267 billion in financial year 23. ठीक है, ट्रेड गैप है ये. याद करो, बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कब होती है? जब हम विजिबल ट्रेड की बात करते हैं, export import of goods and merchandise. When we talk about both trade, means visibles and invisibles, means trade in services, export import of services as well as export import of goods, then वो होता है करंट अकाउंट. ठीक है, तो ये $267 बिलियन का जो डेफिसिट है, दिस इज फॉर द ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड गैप. ठीक. बट ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट की अगर बात करें, मीन्स अगर ओवरऑल का मतलब मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज बोथ, देन दैट ट्रेड डेफिसिट इज $122 बिलियन. ठीक है, ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट की बात करें, ओवरऑल मीन्स बोथ विजिबल एंड इनविजिबल, देन इट विल बी $122 बिलियन थैंक्स टू आवर सर्विसेज एक्सपोर्ट. ठीक है, सर्विसेज में वी आर ऑलवेज इन सरप्लस. ठीक है, बिकॉज वी आर डेफिसिट इन गुड्स ट्रेड, वी आर ऑलवेज सरप्लस इन सर्विसेज ट्रेड. तो दैट्स वाई ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट हमारा कितना है? $122 बिलियन. फॉर मर्चेंडाइज इट इज $267 बिलियन. अगेन अ लॉट ऑफ नंबर्स, बट ये ईयर एंड नंबर्स हैं, दो दे आर प्रोविजनल, देयर कैन बी चेंज इन डेटा, बट इसी के अराउंड रहेगा. तो ये पूरे फाइनेंशियल ईयर का डेटा है, सो इट कैन बी इंपॉर्टेंट. Okay, also our dependency on China is coming down. So China's share in India's merchandise imports declined to 13.79% in financial year 23. That was above 15% से हम बिलो आ गए 14%, मतलब 15% से ज्यादा इंपोर्ट करते थे ओनली फ्रॉम चाइना, ओनली वन सोर्स चाइना. वो कम होके हो गया है लेस देन 14%. ओके, तो बेसिकली आवर डिपेंडेंसी ऑन चाइना इज डिक्रीजिंग. Okay, that was the news. Now, Global Sovereign Debt Roundtable for improving info on sharing debt rating. So basically, global ये जो body है, Global Sovereign Debt Roundtable, it was its first meeting was in February 2023 itself. So it becomes a very important, very important. ठीक है, इसी तरह पहली मीटिंग हुई थी पिछली बार राइसीना डायलॉग्स की. तो राइसीना डायलॉग्स हैड हैपेंड अर्लियर आल्सो, मतलब ओआरएफ कराता है राइसीना डायलॉग. ठीक है, इनॉग्रल मीटिंग हुई थी, यहाँ से डेलीगेट्स आए थे दुनिया भर के. सो इट वाज आस्क्ड इन आरबीआई टीएसआई पेपर 2. तो ये भी इसकी फर्स्ट मीटिंग फरवरी में हुई है. सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, एंड इट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो क्योंकि इसके 3 मेंबर होते हैं, मतलब 3 को चेयर होती है. आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वो तो होगी को चेयर, एंड थर्ड इज करेंटली इट इज इंडिया. whoever has the presidency of presidency of let's say G20 will be the third co-chair of this global sovereign debt roundtable. अभी debt roundtable है क्यों? Because many countries, as IMF has also said, 45% of the emerging countries, low development countries, they are under severe debt trap. Countries like Sri Lanka also. So every traditional creditors, new creditors, private creditors, as well as borrowing nations come together on a single table, एक साथ आके बातचीत करते हैं on how to restructure their debt so that they do not fall under a debt trap. इसके लिए बना है ग्लोबल सोवरेन डेट राउंड टेबल. इसकी पहली मीटिंग फरवरी में हुई थी, रिमेंबर दिस. इसकी दूसरी मीटिंग अभी आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की जो स्प्रिंग मीटिंग्स चल रही हैं उसके साथ साथ हो रही है अप्रैल में. Okay, so amid rising debt vulnerability being faced by low and middle income countries, the Global Sovereign Debt Roundtable has agreed on improving information sharing, including on macroeconomic projection and sustainability assessment at an early stage of debt restructuring process. Okay, co-chaired by IMF, World Bank, and India. Okay, why India? Why we are talking about India here? क्योंकि इंडिया इज द प्रेसिडेंट ऑफ G20. अब ऐसा नहीं है कि अगले साल ब्राजील होगा तो ब्राजील विल बी ऑन द चेयर ऑफ दिस, नॉट इंडिया. करेंटली इंडिया है G20 का चेयर, सो इंडिया. ओके, नाउ
Not very important news this is. India up by 6 spots in global business environment ranking. अब ये रैंकिंग कौन देता है? बाय EIU, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट. ठीक है, 6 स्पॉट बढ़ा है इंडिया. एंड करेंटली इंडिया इज रैंक्ड 46 आउट ऑफ 82 कंट्रीज. 46 आउट ऑफ 82 कंट्रीज. 82 कंट्रीज की ही रैंकिंग है ये, बिकॉज इट इज अ प्राइवेट एनजीओ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वर्ल्ड बैंक नहीं है, तो ये रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना. पर इंडिया रैंक ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट में 6 स्पॉट बढ़ा है. इसका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिगेस्ट लूजर has been in this report has been China due to declining business environment in China. China lost its position by 11 points. Here it is written. And biggest gainer here is Vietnam. Biggest gainer here is Vietnam. Rose by 12 points. अब इस लिस्ट को टॉप किया है सिंगापुर ने. This list has been topped by Singapore and it has been predicted that for the next 5 years Singapore will top this. ठीक है, सेकंड प्लेस पे है जर्मनी. Okay, let's move to the report. So here, business environment ranking by Economist Intelligence Unit. Okay. Now, improved score on parameters like technological readiness, political environment, stable political environment, and foreign investment. So, अब ये एक और चीज है, दूसरी चीज. This is a quarterly report. ये दिसंबर में भी आई थी. Not very important. Quarterly report. ठीक है. So Singapore has topped it. Sorry, I said Germany. This is Canada and Denmark are joint second. Okay. And will be the 3 countries with the best business environment over the next 5 years also. Okay. So just remember the ranking. Biggest gainer, Vietnam 12. Biggest loser, China by 11 places. India got up by 6 places to 46 out of 82 countries. Now, highest tax buoyancy in 15 years in financial year 22. मतलब ये लगभग 6 to financial year back data. ठीक है, by Central Board of Direct Taxes. Tax buoyancy क्या होती है? Tax buoyancy means delta T by delta Y. This means change in tax or growth in tax or change in tax upon change in GDP. That Y is generally denoted for output. ठीक है, इकोनॉमिक्स में Y मतलब आउटपुट मतलब GDP. तो फॉर एवरी राइज और फॉल और चेंज इन GDP, व्हाट इज द चेंज इन टैक्सेस? तो ये होती है टैक्स बायंसी. अब अगर डायरेक्ट टैक्स बायंसी की बात हो रही है, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? तो डायरेक्ट टैक्स बायंसी विल बी चेंज इन डायरेक्ट टैक्स अपॉन द चेंज इन GDP. ठीक है, वॉट एवर राइज इन GDP, व्हाट इज द राइज इन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन. ठीक है, ये होती है टैक्स बायंसी. Okay, here it is written also. Direct tax buoyancy measures growth in the collection of personal income tax and corporate tax, because हम सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, सिर्फ टैक्स buoyancy होता तो चेंज इन टैक्स अपॉन चेंज इन GDP, डेल्टा T by डेल्टा Y. Against the rise in GDP, that is increased to 2.52 in financial year 22. Okay, highest in the last 15 years. इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2003 में था. Here it is there. ठीक है. Now, this reflects in greater efficiency in tax collection. Means for every 1 rupee increase, okay, for every one, let's say for every one rupee increase, we are increasing our tax collection in GDP. We are improving our tax collection by, let's say, 2.5 times of the GDP change in GDP. ठीक है, 2.5 का मतलब क्या हुआ? अगर GDP 100 पॉइंट से बढ़ी तो टैक्स कलेक्शन 250 पॉइंट से बढ़ा है. ठीक है, अगर GDP 100 पॉइंट से बढ़ी और 100 यूनिट से बढ़ी, बट द चेंज टैक्स कलेक्शन रोज बाय 250 units, 2.5 times of the change in GDP. Change in GDP was 100 or change in tax have been 250.
50, 2.5 times, 2.52 to be precise. Okay. So the buoyancy spiked in financial year 22 due to a low base effect. What is low base effect here? Why? क्योंकि जो टैक्स buoyancy फाइनेंशियल ईयर 20 में थी, it was negative of 1.21, means GDP increased and tax collection declined. दो GDP increased, tax collection declined. तो हमारा बेस इफेक्ट क्या था? कम था, बेस लो था. बेस लो के ऊपर आप ज्यादा ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, 2 से 8 जाना और 4 से 10 जाने में आपने, फॉर एग्जाम्पल देर इज बेस आपका 2 यूनिट है, आप चले गए 8 तक, योर राइज इज 4x, बट आपका बेस 4 है और स्टिल आप गए 8 तक, योर राइज इज ओनली 2x. इफ देर विल बी अ लोअर बेस, योर ग्रोथ विल बी हायर और इट सीम्स टू बी हायर. ठीक है, तो 2.52 इज ड्यू टू लो बेस इफेक्ट. ओके, ऑल्सो अब ये नंबर्स तो पता ही है, प्रोविजनल नंबर्स. 16.61 ट्रिलियन इज डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 और ग्रॉस कलेक्शन कितना है? 19.68 ट्रिलियन रुपीज, having a refund of 3.07 trillion rupees. Provisional data. It will be revised soon, but अभी ये provisional data है. Okay, now simple news. Equity mutual fund close at 12-month high of 20,000 crore. इसमें से 14,000 crore has been due to systematic investment plan SIP. ठीक है, जो monthly investment करते हैं लोग, that is SIP. Let's read it. So net investment in active equity schemes rose to 12-month high of 20,500 crore in March, and this was due to higher SIP route, which breached 14,000 crore mark for the first time. 14,000 crore for the first time for SIP. तो 20,500 करोड़ में से 14,000 करोड़, 14,000 करोड़ in mutual fund is for SIP. सेकेंड टाइप कैसा है? लमसम, मीन्स आप एक साथ पैसा डालते हैं. SIP मीन्स आप थोड़ा थोड़ा करके मंथली पैसा डालते हैं. ओके. Also one important thing is here, this one, mutual fund added over 4 million new investor. Total unique investor is 37.7 million. अब ये 2021-22 फाइनेंशियल ईयर 22 का डेटा है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग अभी मार्च की बात कर रहे हैं. ओके, दैट्स इट. इससे ज्यादा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है. Now banking frauds in the eye of beholder. So this is a report. ठीक है, ये लिटरेचर है थोड़ा, but still we will talk about it. Supreme Court recently passed a judgment, अभी recently, that the borrowers, means जिसको आप fraud declare करने जाने हैं, the bankers को बोला गया that the borrowers who you are going to declare fraud, they should be heard first why they defaulted, then only you can say that it is the account is a fraud or not. ठीक है, Supreme Court said that the borrowers must be heard before an account is classified as fraud. ठीक है, fraud कब होता है? If basically अगर आपने बड़ा लोन लिया है and you are defaulting month on month, okay, and there is no communication available with you, it can be declared fraud. Generally 2 साल लग जाते हैं किसी अकाउंट को fraud declare करने में इंडिया में, generally. ठीक, though it should be faster, but 2 साल तो लग ही जाते हैं. Okay, now Supreme Court verdict last week that the borrowers must be heard before an account is classified as a big relief to India INC. ठीक है, it places the onus on the banks before they proceed down this line. The spotlight is firmly on an issue that doesn't get attention it deserves, the fraud chain from detection to redress. ठीक है, तो अभी इसमें रिजर्व बैंक की दो एनुअल रिपोर्ट्स और FSRs की बात होगी. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की. So let's see it. So annual report of 2020-21 noted that average time lag between date of occurrence of fraud and its detection is around 23 months. 23 months, 2 साल से 1 महीना कम. ठीक है, 23 months है average date of time lag, average time lag. ठीक है, कब fraud हुआ और कब detect हुआ. Okay. And for big loans like 100 crores and above, it is 57 months. Around 5 years.
5 साल लग जाते हैं बड़े फ्रॉड्स को डिक्लेयर करने में फ्रॉड। ओके, नाउ it is also said that banks have migrated to live reporting through fraud monitoring returns from April 1, 2017. But still, live reporting means from the day of occurrence. ठीक है, जैसे ही लगता भी है कि ये फ्रॉड हो रहा है, तो बैंक्स कैन डिक्लेयर थ्रू फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न्स, तुरंत लाइव रिपोर्ट कर सकते हैं, बट स्टिल द फ्रॉड इज प्लेगिंग द सिस्टम। रिसेंटली 25,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ इन आईसीआईसीआई बैंक, 25,000 करोड़ अभी इसमें आएगा भी, ठीक है, बाई एबीसी शिपयार्ड, बिकॉज दे लैग्ड इन डिक्लेयरिंग दैट इट इज अ फ्रॉड। तो ओके, now some of the big losses suffered by the banks on the account of frauds could have been avoided if good compliance culture was ingrained in the respective banks, because it is a compliance culture. RBI is still not pushing for fraud detection to the banks. कोई एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं है, सारे बैंक्स का अलग अलग रूल्स है। एवरी बैंक हैज इट्स ओन रूल्स टू डिक्लेयर समथिंग फ्रॉड, ठीक है, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन दैट प्रोसेस। ओके, okay, here one of the major areas of non-uniformity in process pertains to identifying red flag accounts. It is based on an indicative list of early warning signals and it is not uniform across the banks. Okay, banks are unable to confirm RFA tagged accounts as frauds within the prescribed period of 6 months. Okay. The reasons cited included delays in either completing or inconclusive finding of forensic audits. So since there is no clear structure for all banks, it is different, and due to lack of or inconclusive finding of forensic audits also, there is a lag in fraud detection. Okay. So now the classic case is here, ABG Shipyard. Around 25,000 crore का ये fraud हो गया था. It was detected by business standard, it is written here, in 2020 itself, but to CBI to file its first FIR, ठीक है, इसको लगा 2022, 2022 में आके पहली FIR की गई इस केस के ऊपर। सो देयर वाज अ सब्सटेंशियल डिले। फ्रॉड 2019 में हुआ, न्यूज़पेपर में 2020 में आया और सीबीआई रिपोर्ट करने में 2 साल और लग गए। तो दैट्स व्हाई देयर वाज टू मच लैग, 3 साल का लैग हो गया इतने बड़े फ्रॉड के लिए। दैट्स व्हाई देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म प्रोसीजर, इसके बारे में बात है बस। Now center to revamp soil health card. Okay, wait. Okay. Okay. So center to revamp soil health card initiative to aid farmers. So soil health card scheme है जिसमें सेंटर क्या करती है, द गवर्नमेंट डज व्हाट, इट टेस्ट्स द सॉइल, ठीक है, सॉइल्स को टेस्ट किया जाता है वेदर दिस, और क्या पता लगाया जाता है that this soil is suitable for which kind of cultivation, which type of fertilizers should be used in this kind of soil to let's say enhance the productivity of agriculture, ठीक है, सस्ते में बढ़िया काम करने के लिए, कि कम फर्टिलाइजर यूज हो तो लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगा, ठीक है, अगर सही चीज उगाओगे तो ज्यादा कमा पाओगे। सो दैट्स व्हाई सॉइल हेल्थ कार्ड इनिशिएटिव इज यूज्ड। ये 2015 में लॉन्च हुई थी, अब इसको थोड़ा अमेंड किया जा रहा है। Okay, so what is it and what are the amendments? Let's see it. So the government is redesigning the soil 2015. Okay, the government is redesigning the soil health card initiative targeting small and marginal farmers with an investment of around 600 crore to analyze 50 million
सॉइल स्पेसिमेन, ठीक है, इन 3 years। तो 600 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है सरकार फॉर 50 million soil in samples, बिकॉज बिफोर एवरी क्रॉप साइकिल यू हैव टू गेट टेस्टेड, ठीक है, अपने अपने सॉइल को टेस्ट कराना जरूरी है। ओके, द रिवैम्प्ड प्रोग्राम इज सेट फॉर अ लॉन्च बाय द मंथ एंड। So, revamped soil health card is an add-on on ongoing efforts to promote organic farming. Okay. Through the scheme, farmers will be notified about which fertilizers to pick for cultivating a particular crop on a particular land. Okay. Also focusing on creating a network of 7,500 soil health entrepreneurs at Gram Panchayat and block level. Okay. Also, farmers can get a service from them at a cost that will be decided by the government. किससे सर्विस किससे ले सकते हैं? Those soil health entrepreneurs. Okay, and this cost will be minimal as farmers have to get their soil tested before every crop cycle. Okay, currently one soil sample is collected for every 2.5 hectares of irrigated land and 10 hectares of rain-fed land. ओके, अगर इरिगेटेड लैंड 2.5 हेक्टेयर से एक सॉइल सैंपल ले जाएगा और रेन फेड है, मींस देयर इज नो इरिगेशन फैसिलिटी, ओनली रेन इज योर सोर्स, देन 10 हेक्टेयर एंड दैट विल बी, अब कहां से लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। पॉइंट नंबर 2 इज, ये टारगेट करती है, दिस स्कीम टारगेट्स मोस्टली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स का एवरेज एरिया इज लेस देन 2 हेक्टेयर्स, ठीक है, लेस देन 2 हेक्टेयर्स, ठीक है। तो 2.5 हेक्टेयर जो एवरेज सॉइल सैंपल लिया जाता है, तो कई बार क्या होता है कि मिस हो सकता है, there can be missing of some farmer soil samples and so on, ठीक है। अगर एवरेज एरिया आपका 2 हेक्टेयर से कम है और आप 2.5 हेक्टेयर पे एक सॉइल सैंपल ले रहे हैं, तो मे बी सम फील्ड्स, सम इंडिविजुअल फार्मर फील्ड्स कैन बी ओवरलुक, ठीक है। ऑल्दो एवरेज लैंड होल्डिंग of small and marginal farmer is less than 2.5 hectares, the reports they receive are for large land holdings. Okay. Now, aiming to give farmers an easy decision tool rather than a complex report. ठीक है, मीन्स अभी तक रिपोर्ट जो आती है उसका एक easy version will be given to farmers directly. They will be told use this to improve your productivity. The revamped portal will make soil health information easily accessible and available also. It is not been launched. जब launch होगा PIB में already आ जाएगा, ठीक है। अभी मंथ एंड में लॉन्च होगा, so we will discuss about it in more detail in, let's say, month of May. Okay. Now, important thing here is Mercosur. This southern common market, ठीक है। इसका इंग्लिश नेम यही है, सदर्न कॉमन मार्केट। मर्कोसुर इज द एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ द स्पेनिश वर्जन ऑफ दिस सदर्न कॉमन मार्केट। अब सदर्न कॉमन मार्केट क्या है? तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज और लैटिन कंट्रीज जो है, दैट इज ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे, 4 कंट्रीज है, और भी है, बट इनिशियली 1991 में दीज 4 कंट्रीज स्टार्टेड इट। तो मैक्सिको भी मर्कोसुर का पार्ट है, इंडिया है ही पार्ट, ठीक है। इंडिया आई थिंक इज अराउंड 2004 तब से पार्ट है, ठीक। तो ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे आर द ट्रेडिंग ब्लॉक्स ऑफ मर्कोसुर। अब ये सदर्न कॉमन मार्केट है, रिलेट्स टू combined efforts of the South Latin American countries, ठीक है। So India and Mercosur are currently in preferential trade agreement. लोएस्ट लेवल ऑफ ट्रेड अग्रीमेंट होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। तो आप किसी किसी चीज पे आप राजी कर जाते हैं, यू कम ऑन द टेबल फॉर सम थिंग्स फॉर अ प्रेफरेंशियल ट्रेड बिटवीन 2 ट्रेडिंग ब्लॉक्स, जैसे इंडिया और मर्कोसुर है। बट ये लोएस्ट फॉर्म ऑफ एनी ट्रेड अग्रीमेंट होता है। इसके ऊपर होता है FTA, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स, ठीक है। तो इंडिया वांट्स टू इनहेंस दिस मर्कोसुर
India Mercosur agreement from PTA to FTA. Okay. So India and the Mercosur group of Latin countries are in discussion to expand their preferential trade agreement, the PTA. अब इसको free trade agreement की तरफ ले जाना है, FTA. Okay, the trading blocs are Brazil, Argentina, Paraguay, and Uruguay. India and Mercosur signed the preferential trade agreement in 2004. Now combined GDP of the four Mercosur countries is less than $2 trillion and market of 295 million people. Okay, अब tariff concession कितना है? 10% to 100% on 450 and 452 tariff lines respectively. 450 from India, 452 from Mercosur. Okay, now India's trade with Latin America, Latin countries वो जो Latin भाषा बोलती हैं, mostly Spanish speaking countries. Okay, $2 billion and over $50 billion in 2023. ठीक है, $2 billion था in 2000, it has shot up to $50 billion in 2023 and we want to improve it more. ठीक है, तो वेनेजुएला से ऑयल नहीं खरीदते, नहीं तो और होते अभी ट्रेड हमारे. ठीक है, क्लोजर इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद की कंट्रीज लाइक मेक्सिको, ब्राजील एंड अर्जेंटीना. ओके, तो हमारा ट्रेड कितना है? $50 बिलियन का. मर्कोसुर हमने साइन कब किया? 2004 में. विच आर द फोर ट्रेडिंग ब्लॉक्स? ब्राजील, उरुग्वे, पैराग्वे एंड अर्जेंटीना. Okay, remember this. India wants to enhance the preferential trade agreement to FTA, means free trade agreement. इतनी बातें याद रखनी है बस. Okay, now MCQ not very important, but still. Okay, so let's do the MCQs. बातचीत का किस्सा खत्म. This is an easy question. What is the percentage of stake the federal government and LIC plan to divest from IDBI bank? ये कितना divest करने वाले हैं? IDBI current affairs. Is there an exam for IDBI also? I would suggest please go through the phase 1 current affairs also, because in banking exam ये थोड़ा person in news type के questions भी आते हैं. Not just analytical questions but also person in news, amount in news, or any agreements in news, portals in news, ये सब भी आ सकते हैं. So go through the phase 1 current affairs also. Okay, so now question number 1. Is anyone doing it? Should I do it? Okay, let me do it. So it is this A. ठीक है. Okay, 30% and 30.24%. क्यों? करेंटली इंडियन गवर्नमेंट का अराउंड 49% स्टेक है, LIC का अराउंड 45% स्टेक है. ठीक है, जब ये हो जाएगा तो इंडियन गवर्नमेंट का 19% रह जाएगा, LIC का रह जाएगा अराउंड 15%. ओके, सॉरी, उल्टा बोल दिया. ओके, what percentage change for imports for India in March on a cumulative basis during financial year 23? Question number 2. The percentage change in imports for India in March on a cumulative basis during financial year 23. Imports बढ़े हैं या कम हुए हैं? This is simple. Is anyone doing the MCQs or not? कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? What is the percentage change in imports for India in March and on a cumulative basis?
कर दो. Is anyone attempting this or not? Okay, let me do it. So it is B. B is down by around 8%. ठीक है. इंपोर्ट्स हमारे मार्च में कम हुए हैं. कम कितने हुए हैं? अराउंड 8%. बहुत ज्यादा कम नहीं हुए, अराउंड 8% कम हुए हैं. ठीक है. $58 बिलियन के आसपास हमने इंपोर्ट किया है, $38 बिलियन के आसपास हमने एक्सपोर्ट किया है. ठीक है. और अराउंड $20 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है. ठीक. और 16.5% ऑन क्यूमुलेटिव बेसिस इट हैज गॉन अप होके कितना हुआ है? $714 बिलियन. You don't have to remember all these numbers just because ये डेली है, डेली करंट अफेयर्स है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं. ओके. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर. एकलव्य, नो इश्यूज. नो 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 प्रॉब्लम. कोई दिक्कत नहीं. ओके, नाउ नो एकलव्य, फॉर एडाई नॉट जस्ट दिस विल बी सफिशिएंट, बट आपको इंश्योरेंस का अलग से इंश्योरेंस सर्कुलर्स और इंश्योरेंस न्यूज विल बी, यू विल हैव टू चेक. ओके, नाउ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन है GSDR, co-chaired by IMF, World Bank and Indian Finance Minister is correct. Isha, it is C. Okay, right answer. Debt sustainability and debt restructuring challenges. सही जवाब. Correct, Nivedita. Right, it is C. Now question number 4. What is the reason behind India's improved ranking in the latest business environment rankings globally? ये तो नहीं होगा. This is an easy one. Correct. Eklavya, correct. You are right. सही जवाब. Okay, so A is the correct answer here. Improved score in technological readiness. जो भी इंडिया में, भाई इन्वायरमेंट तो समझते हो ना क्या चल रहा है. देयर इज अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन इंडिया, करेक्ट. फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग, करेक्ट. टेक्नोलॉजी, वी आर रेडी, यस वी आर. सो यस, ए इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट निवेदिता, ए इज द करेक्ट आंसर. विद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऐसी चीजें तो नहीं हो सकती है अभी. ठीक है. इकोनॉमिक बूम था नहीं लास्ट क्वार्टर में. वी आर कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग जीडीपी हम लोग देखे हैं अपनी. 4.2% तो घूम रहा है. ठीक. क्वार्टर ऑन क्वार्टर. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन. What is direct tax buoyancy? Easy question, but a good static question. What is direct tax buoyancy? सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है, नॉट ऑल द टैक्सेस. करेक्ट निवेदिता. ओके, यस ईशा, राइट आंसर. और फिफ्थ, यस इट इज राइट. सही जवाब. ओके, सो ए इज द राइट आंसर. मेजर ऑफ ग्रोथ इन कलेक्शन ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स, क्योंकि यही दो होते हैं डायरेक्ट टैक्स. ठीक है. अगेंस्ट द राइज इन जीडीपी. ठीक है. ग्रोथ इन कलेक्शन ऑफ टैक्स अगेंस्ट द राइज इन जीडीपी. अभी ग्रोथ आगे पीछे दोनों हो सकती है, तो जनरली चेंज इन कलेक्शन ऑफ टैक्स अपॉन चेंज इन जीडीपी.
ठीक है, direct tax. Okay, so that's it for today. We are done for today. Thank you everyone for joining. I hope you like the class. If आज के लेक्चर से आपके नॉलेज में वैल्यू ऐड हुआ है तो डू लाइक एंड शेयर एंड मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास ऑब्वियसली टुमारो. तब के लिए थैंक यू, बाय बाय. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स यू कैन रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम. थैंक यू, बाय.